We have seen in the previous lecture the early attachment and all the processes that were involved in the synthesis and then release of the virion from the bacterial cell. Now for animal viruses, this is a bit different because in bacteriophages, when we were talking about bacteriophages, they actually lyse the cell. So this is not happening in the animal cell, and their mechanism is a bit different. Their entry is also a bit different. So all viruses except plant viruses, they must associate with the potential host cell and long enough to gain entry into the cell. The molecules that are present on the surface of virion are known as ligands, and molecules on the surface of the host cell are called receptors. In some cases, there are two or more host cell receptors which are involved in the attachment. For example, if we're talking about HIV, then they have binding affinity for CD4 and CCR5 both, and these both cells are used by immune system, and they tend to बाइंड विद साइटोकाइंस. तो साइटोकाइंस केमिकल एक तरह की सिग्नलिंग है, और उनकी बाइंडिंग साइटोकाइंस के साथ जो है वो वायरस को अट्रैक्ट करती है बाइंड करने में. देन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वायरसेस की, ये भी आपके इन्फेक्शन के आउटकम को डिटर्मिन करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पोलियो वायरस, दे आर फाउंड इन ह्यूमन nasopharynx, gut and anterior horn cells of the spinal cord. So therefore it shows a change in severity from milder such as GI disease to severe such as paralytic effect. And if we're talking about, in contrast, measles virus, their receptors are found in most tissues, and the disease is presented by widespread rash throughout the body. यानी वायरस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी भी एक तरह के आप ट्रॉपिज्म कह लेते हैं उसको ट्रॉपिज्म कहा जाता है. जो वायरस जो है कहाँ पर अपनी जो आप कह लें कि कहाँ पर ज़्यादा एफिनिटी है या किन सेल्स के साथ वो जाके ज़्यादा बाइंड करता है, उसकी वजह से भी आपको जो है इन्फेक्शन की सीवियरिटी का अंदाज़ा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम पोलियो वायरस की बात करते हैं तो इनकी एफिनिटी नेसोफेरिंक्स जीआई में भी होती है और हॉर्न सेल्स में भी होती है स्पाइनल कॉर्ड की. तो इनकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ समवॉट वेरिएबल होते हैं, यानी माइल्डर भी हो सकते हैं, माइल्डर में सिर्फ जीआई डिजीज़ से, तो सीवियर भी हो सकते हैं जिसमें पैरालिटिक इफेक्ट है. इसी की कॉन्ट्रास्ट में अगर हम मीज़ल्स वायरस की बात करें तो उसकी जो रिसेप्टर्स हैं वो तकरीबन यानी हर तरह की टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, तो आपको एक वाइड स्प्रेड रैश नज़र आता है पूरी बॉडी में. प्लांट वायरसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन है, क्योंकि अप टिल नाउ नो रिसेप्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर प्लांट वायरस. The plant virus can only enter the plant by damaging the cell or tissue, which is often achieved by plant eating insects, जो कैरी करते हैं वायरसेस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाने के. तो जो एंट्री है होस्ट में, this interaction sets into motion events that allow the nucleocapsid to enter. For example, पैरामीज़ोवायरस की अगर हम बात करें, जैसे मीज़ल्स की बात करें, तो अटैचमेंट के बाद द मेम्ब्रेन लिपिड्स रीअरेंज adjacent halves of the contacting membrane and merge, and a proteinaceous fusion pore forms. The nucleocapsid then enters the host cell cytoplasm, where a viral enzyme carried within the nucleocapsid begins to synthesize viral messenger RNA while it is within the capsid. The resulting endocytic vesicles are filled with virions and fuse with endosomes depending on the virus. The escape of the nucleocapsid or its genome may occur either or after fusion. So endosomal enzymes can aid in virion uncoating. Low pH often triggers the uncoating process. In some instances, the viral envelope fuses with endosomal membrane and nucleocapsid is released into the cytoplasm. Once in the cytoplasm, the viral nucleic acid may then be released from the capsid after uncoating, or may function while still attached
to the capsid component. So here we can see the entry or attachment. The first one which we're talking about was this endocytosis. होता क्या है कि जैसे पैरामिक्सोवायरस की बात होगी, इनमें ये होता है कि जब ये बाइंड करते हैं तो ये कॉन्फर्मेशनल चेंजेस कर रहे हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इससे फिर क्या हो रहा है कि ये एक वेसिकल फॉर्म हो रहा है पूरा एनवेलप के इर्द गिर्द। ये देखें आप यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन दोबारा इंटैक्ट हो गई। पहले जब ये रिसेप्टर्स, ये लाइगेंड्स, these are the ligands and these are the receptors. When these ligands are attached to the receptors, then it is causing a conformational changes in the contacting membrane. So ये एक जो आपको बेंडिंग नज़र आ रही है मेम्ब्रेन की, दिस इज कॉजिंग अ वेसिकल टू फॉर्म, and then this membrane is intact and this whole vesicle is inside the cytoplasm. Then what happens, ये जो एंडोसाइटिक वेसिकल्स है इसके अंदर विरियन का फील्ड है पूरा। अब यहाँ से इसका जीनोम जो है ये क्या करेगा, अनकोटिंग में हेल्प करेगा। यानी जब पीएच ड्रॉप हो रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसकी अनकोटिंग हो गई और वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड इज इनसाइड द साइटोप्लाज्म. So this is one of the mechanism that is being observed in measles virus. And then there are some enveloped viruses in which these spikes or ligands, when bind to the receptors, they actually fuse with the membrane of the host, as you can see here. This envelope is, यानी यहाँ पे अनकोटिंग पहले हो रही है या अनकोटिंग बाद में हो रही है। वेसिकल के अंदर मौजूद होने के बाद ये जब ड्रॉप हो रहा है पीएच, फिर अनकोटिंग करके ये न्यूक्लियोकैप्सिड साइटोप्लाज्म में आ रहा है। और यहाँ पे अनकोटिंग किस तरह हो रही है, पहले ही ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जा रहा है एनवेलप, और फिर ये न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट दो मैकेनिज्म्स हो गए एंट्री के। द फर्स्ट वन इज़ बीइंग डन बाय एंडोसाइटोसिस और वेसिकल के अंदर, उसके बाद न्यूक्लियोकैप्सिड रिलीज़ हो रहा है। और दिस फर्स्ट वन इज़ बीइंग बाय फ्यूजिंग विद द सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद अनकोटिंग हो रही है और न्यूक्लियोकैप्सिड साइटोप्लाज्म के अंदर। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, एनिमल वायरसेस, दे कैन नॉट एम्प्लॉय द फ्यूजन मेथड to release the endosome. So in this case what happens, they have to be taken inside the cell by endocytosis. So these capsid molecules, they are attached with the receptors on the cell membrane, then a vesicle is bound, and then the endosome, from the endosome this viral genome is being uncoiled and released inside the cytoplasm. The low pH of the endosome causes the conformational changes in the capsid, and the altered capsid then contacts the vesicle membrane, and either they release the viral nucleic acid into the cytoplasm or rupture the membrane to release the intact nucleic acid. From here you can see that it is still attached to the capsid and it is unwinding and entering into the cytoplasm. Then comes the synthesis. Synthesis is being different for different viruses as it is tightly regulated. So कुछ late proteins होती हैं, कुछ early proteins होती हैं, तो so the genes that are encoding these proteins are called early and late genes respectively. So many early proteins are involved in taking over the host cell so that they can synthesize later on, and the late proteins, they causes the capsid proteins and other proteins which are involved in self assembly and release. Then assembly actually happens in cytoplasm, but some of the viruses also assemble in nucleus, and for many viruses so called virus factories are generated. These are large paracrystalline clusters of either complete nucleocapsid or procapsid, as you can see here. This one, this is virus factory. तो ये इट्स सर्टन टाइप ऑफ, ये आपको देखिए कैप्सिड का शेप नज़र आ रहा है। तो वायरल फैक्ट्रीज ही इनसाइड द साइटोप्लाज्म बन जाती हैं और वहाँ पर
ये पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, या प्रो कैप्सिड जिसको कह लें, वो खुद ब खुद वहाँ पे फॉर्म हो जाता है. देन कम्स विरियन रिलीज. विरियंस जो हैं दे आर रिलीज्ड बाय बडिंग. द होस्ट सेल may survive for some time and continue releasing virions. All envelopes of animal viruses are derived from host cell membrane by a multi-step process. First, as you can see, it's a multi-step process. बडिंग के थ्रू भी जो है या लाइसिस होगी या फिर बडिंग के थ्रू भी आपके पास एनिमल वायरसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं. So the first one, these are step by step processes by which you can see the release of virion. This one is for the influenza virus. And what happened, the first virus encode proteins are incorporated into the cell membrane. These are the viral matrix protein and they are being encoded in the cell membrane, you can see from it. Then the nucleocapsid is simultaneously released and the envelope formed by the membrane budding. In several virus families, a matrix protein attaches to the plasma membrane, as you can see here in influenza virus, and then it aids in budding. As you can see here, this is the viral nucleocapsid. These are being attached here, the viral matrix proteins. Now what happened? This is neuraminidase, this red one. Now they are causing the cell membrane to contract and form the vesicle. This genome is then inside this matrix protein, and now the free infectious virion with its envelope is being released from the cell by budding, and in this case this plasma membrane is intact again. So viral envelope proteins are inserted into the host cell membrane. Now these protein lines the cytoplasmic face of the plasma membrane, यानी बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ है. Then the nucleocapsid, यहाँ पे आपको सिर्फ एक दिखाया गया है, ये तकरीबन एक सेल के अंदर से 7 या 8 निकल सकते हैं. सही है. So they are being directed to the plasma membrane by host cell microtubules, जिनको नहीं दिखाया गया. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोट्रूड्स आउटवर्ड, ये देखें बाहर की तरफ निकल रहा है, और न्यूक्लियोकैप्सिड आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स लाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन नेक ऑफ द प्रोट्रूडिंग मेम्ब्रेन इज पिंच्ड ऑफ एंड अ मैच्योर विरियन इज रिलीज्ड. तकरीबन 7 से 8 न्यूक्लियोकैप्सिड्स जो हैं वो एक वायरल प्रोटीन से निकल सकते हैं. इन सम केसेस वैक्सीनिया वायरसेस दे शो द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग एक्टिन टेल्स that propel nucleocapsid through the plasma membrane directly into the adjacent cell. In this way, the virus avoids detection by the host immune system. And in plant viruses, it also happens through plasmodermata. कुछ आपके पास ये तो बडिंग के थ्रू, और कुछ ऐसे आपके पास वायरसेस होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग एक्टिंग टेल फाइबर्स बन जाते हैं और वो डायरेक्टली एडजेसेंट सेल के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ से फिर ये अपना नया वायरस जो है वो बना लेते हैं. सो इन दिस वे इस तरह के वायरसेस जो हैं ये डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम से, और ये इजीली अपने आप को छुपा लेते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द एनिमल वायरसेस. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture about the cultivation of viruses.